Okay. So last class mein we studied about pure rolling, right? Pure rolling mein, what is pure rolling means? The point of contact with respect to ground is zero. Okay. In that mein, what is the thing? What is the condition? Tell me. If the particle is moving Torque with is some zero velocity, equal to R omega. VC and R omega. रोटेशन की वजह से टेंजेंशियल वेलोसिटी आ रहा है, दैट इज आर ओमेगा, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है. सो दोनों इक्वेट करने से दोनों इक्वल हो जाएगा एट पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. सो दिस इज यूनिफॉर्म रोलिंग में. यूनिफॉर्म रोलिंग वी स्टडीड. यूनिफॉर्म रोलिंग में the each and every particle is going with the same velocity. Velocity is not increasing. Velocity is not increasing. ये सेम कांस्टेंट है. अभी क्या होगा, वेलोसिटी अगर वेरिंग हो तो, और ओमेगा is also varying, suppose at that time there will be acceleration comes in picture. That's why that is called non-uniform rolling बोलते हैं. Okay, चलो non-uniform rolling where acceleration come into picture. ये कैसे सर कैसे रीच करेंगे सर, ये किधर आएगा बोले तो किधर एग्जांपल कैन टेल मी नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग. कैन टेल मी एग्जांपल वेयर वी यूज इन आवर पोर्शन में सेपरेटली नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग बोलते हो नहीं दिखेगा जनरली. Cluster and the slipping. स्लिपिंग ऐसा नहीं, स्लिपिंग के बारे में नहीं, एक किधर यूज होगा जनरली मोशन इन एन इंक्लाइंड प्लेन. इट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन करके आ रहे हैं, सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग. ओके, नाउ नॉन यूनिफॉर्म रोलिंग मतलब क्या है देखो. when the linear velocity or angular velocity or both of the rolling body change with time, the motion is said to be non-uniform rolling. So velocity or angular velocity change हुआ तो time के साथ, then only will get non-uniform rolling. Okay, and non-uniform rolling में क्या होगा, acceleration रहेगा not equal to zero, and angular acceleration also will not be equal to zero. Okay, center of mass का acceleration and angular acceleration is not equal to zero. That's why there will be acceleration will be there each and every particle का starting acceleration or deceleration होगा. Okay, so therefore the rolling body accelerates or decelerates while rolling. In this non-uniform rolling में accelerate भी होगा और deceleration भी होगा. That is called non-uniform rolling. उनका short form में लिख लो. मतलब if I talk about this object, देखो इसके पास suppose मान लो acceleration of center of mass is there, and इसके पास alpha is also there. मतलब रोलिंग भी हो रहे, आगे भी जा रहे विद बट सम एक्सेलरेशन विल बी देयर. ओके, नाउ टेल मी ईच एंड एवरी पार्टिकल का इसका रेडियस इज आर मान लो. ओके, नाउ टॉक अबाउट द पार्टिकल का, एक एक पार्टिकल का बोलो इसके पास क्या होगा. ईच एंड एवरी पार्टिकल का आई टोल्ड राइट ए बी सी डी. ओके, इसमें पार्टिकल का क्या होगा, ईच एंड एवरी पार्टिकल विल हैव सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विल बी देयर. ईच एंड एवरी पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन विल बी देयर, एंड इधर सेंटर ऑफ मास का सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन विल बी देयर. ओके, रोटेशन के वजह से also there is a tangential acceleration because of alpha के वजह से there is acceleration. So which direction that is, देखो ऐसा घूमता जा रहा है ना, tangential acceleration like this. What is the formula? A equal to R R alpha. R alpha. हाँ, इधर इसका घूम के tangential acceleration रहेगा, रोटेशन की वजह से आ रहा है ना, रोटेशन की वजह से there is a tangential acceleration R alpha, and here रोटेशन की वजह से there is a acceleration R alpha. Now you can find net acceleration, right? Net acceleration anywhere you can find, right? And pure rolling में क्या होगा, प्योर रोलिंग में पॉइंट में क्या होगा, बॉटम में पॉइंट में a इक्वल टू आर अल्फा. इज अ प्योर कंडीशन, प्योर रोलिंग का कंडीशन, राइट. a इक्वल टू आर अल्फा बिकॉज विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द पॉइंट p एंड द ग्राउंड. दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग, राइट. नॉन इनफॉर्म प्योर रोलिंग भी होगा ना, नॉन इनफॉर्म प्योर रोलिंग में a COM इज इक्वल टू आर अल्फा. सपोज टेल मी इफ a COM इज ग्रेटर देन आर अल्फा, क्या होगा. Sir, the forward It slipping. will go on forward फॉरवर्ड direction. स्लिपिंग, एक कर्र बोल के आएगा. वो खेलते हैं ना टॉम एंड जेरी में, वो सडनली जाके जाएगा ना ऐसा. सो स्लिपिंग बोलते हैं, फॉरवर्ड स्लिपिंग, फॉरवर्ड स्लिपिंग. एंड ACOM is less than R alpha, backward slipping, and ACOM is equal to R alpha, that is pure rolling. Is a pure rolling. Okay. Now tell me what will be the whether acceleration
will be there at the bottom point में in pure rolling? Yes or no? Yes है तो क्यों? No है तो क्यों? No, sir. No. Why? Sir, just velocity won't be there. Velocity will not be there. Acceleration, net acceleration I'm talking about. Still be there. Which side? Why? Cancel हो जाएगा ना? So, but it still be there. Why? भी there बोलते क्यों? Won't there be friction? No. प्रणव बोल सकते हैं? Whether acceleration will be there at the contact point में acceleration will be there or not there? Sir, centripetal will be there. Centripetal will be there always because जब भी घूमेगा ना centripetal acceleration always will be there. Okay? चलो. Now इसका बेस में थोड़ा understand करने का. So therefore pure rolling में condition क्या है? Finally we got The V alpha's equal to scope. Alpha's angular acceleration. You know. angular acceleration. Alpha is angular acceleration. So centripetal acceleration will be there. Formula is V square by R, right? Now condition for pure rolling क्या है? V COM equal to R omega, A COM equal to R alpha. Always. Whenever our pure rolling को क्या बोलते हैं? Rolling without slipping. Okay. Whenever the sentence will be given, this is pure rolling. तो क्या? चलो. Now angular momentum भी सीखेंगे. Angular momentum का questions भी करना पड़ेगा हम लोग. Okay. In pure rolling में and rolling में. Already we know, right? Angular momentum को tell me. Suppose now particle is there. It is going with some velocity v with respect to O. Okay, इसका मास है m, रेडियस है r. इसका रेडियस, इसका डिस्टेंस इज r, इसका रेडियस इज r. टेल में एंगुलर मोमेंटम एट दिस रेस्पेक्ट टू O इज सो मच. टेल में ये वाला इसके पास अल्फा भी होगा, मतलब घूम रहे हैं आगे भी जा रहे हैं. सो एंगुलर मोमेंटम आपको दोनों ऐड करना पड़ेगा. दो मोशन होगा. कौन सा? एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस angular momentum due to rotation. Okay, tell me angular momentum due to center of mass का कितना होगा? Tell me. MVR. NB. रोटेशन की वजह से बोलो पहले. ठीक है, फर्स्ट रोटेशन लिखेंगे. I omega. R ओमेगा प्यूरली रोटेशन, राइट? प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास का. ओके, चलो इसका I ओमेगा प्लस now the particle is going with straight linear translation motion. Translation motion का क्या है? mv r, right? R into r cross mv, right? R cross p is momentum, right? R cross mv, right? mv r sin theta. But आपको इधर साइन कन्वेंशन देखना पड़ेगा. वेरी इंपॉर्टेंट. ये साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है आपको. ये दोनों ऐड क्यों कर रहे हैं? वी हैव टू सी द डायरेक्शन. देखो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम विल बी, देखो कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ द ओमेगा and the curl thumb indicate direction of angular momentum. इनवर्स है. इसका देखो r को एक्सटेंड करो, r को एक्सटेंड करो एंड r से mv डायरेक्शन, मोमेंटम का डायरेक्शन r से v डायरेक्शन में घुमाओ, वो भी इनवर्स आ रहा है. दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी है. आपको चेक करना पड़ेगा. वांटेडली दे विल गिव तो माइनस ही आएगा एक बार. आपको चेक करना पड़ेगा. सिंस बोथ दोनों आर इन द सेम डायरेक्शन इनवर्स ओनली, वी शुड से देयर एडिशन एंगुलर मोमेंटम. So the लिख लो, check clockwise and anti-clockwise and put sign conventions accordingly. ये भी inverse है ना? और we can tell inverse बोल सकते हो और clockwise बोल सकते हो, right? ये वाला भी clockwise है. That's why we are adding plus. दोनों same direction. Sir, is it Okay. always plus? नहीं ऐसा नहीं है. आपको अब क्वेश्चन दूंगा, एक उल्टा आएगा, उल्टा है तो माइनस लगाना पड़ेगा. Sir, but Okay. isn't clockwise always supposed to be negative? नहीं, इसमें टॉर्क वाला नहीं है केस में. आपको दोनों चेक, वेक्टर क्वांटिटी है ना, दोनों सेम डायरेक्शन वाला ऐड करने का ऑलवेज. ओके, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन आल्सो ऐड करो. नेगेटिव मींस इनडायरेक्टली आउटवर्ड्स बोल के मीनिंग है. दैट्स इट, कुछ नहीं. ओके, चलो एक क्वेश्चन करो. A disk of mass m and radius r is rolling on a horizontal ground with linear velocity v. एक डिस्क है, उसका मास है m and radius r, it is moving with velocity v. ये वाला what is the angular momentum of the disk? A disk है, angular momentum of the disk about the axis passing through the bottommost point and perpendicular to the plane of the motion. देखो इस पॉइंट में मुझे एंगुलर मोमेंटम चाहिए about this disk. Tell me, देखो when it's rolling and coming like this, disk है,
इसका रेडियस से द गिवन है केपलर, राइट? अबाउट दिस पॉइंट में आई वांट, सो अबाउट दिस पॉइंट में एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? दोनों को वैसे होगा ना, वन इज घूम रहे बिकॉज रोलिंग रोलिंग करके जा रहे हैं ना, इज गोइंग, एक घूम के आ रहे हैं, ऐसा जा रहे हैं, राइट? एक दोनों वैसे रहेगा, वन इज रोटेशन, वन इज ट्रांसलेशन मोशन का. सो एंगुलर मोमेंटम अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ट्रांसलेशन का. ओके, सेंटर ऑफ मास के वजह से, रोटेशन की वजह से, व्हाट इज द एंगुलर मोमेंटम? आई Sir, ओमेगा. it's pure rotation. प्योर रोटेशन नहीं है, आगे जा रहे हैं ना. व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी? वेलोसिटी से जा रहे हैं ना आगे, सो रोलिंग करके जा रहे हैं. So we'll have omega and v. हाँ, वी दोनों रहेगा. Can you go back for 1 second? Yeah. Okay, yeah, done. ओके, अनो करो. Sir, mr into r omega by 2 plus v. सॉल्व करेंगे. डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दो, एंड ट्रांसलेशन की वजह से क्या होगा? आर इन क्रॉस एम बी, राइट? ओके, sir. नाउ देखो, दोनों से प्लस माइनस से चेक करो. इसका रोटेशन की वजह से इनवर्स है, क्लॉकवाइज है, एंड इसका आर को एक्सटेंड करो, आर को एक्सटेंड कर रहा, एंड आर क्रॉस वी आल्सो इनवर्स ओनली, सो बोथ आर पॉजिटिव, दैट्स व्हाई प्लस लगाया. ओके, नाउ इसमें व्हाट इज द ओमेगा कन्वर्ट कर लो v by r में, because options are given in terms of Sir, v में. on the answer, 1 second. Tell Sir, me. but how can we So what will be convert 3 if by it's 2 not pure? MVR? हाँ 3 by 2 MVR. 3/2 mvr. Sir, Okay. how can we convert if it's not pure rotation? अब प्योर रोटेशन नहीं है, प्योर प्योर रोलिंग में आपको ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर एज्यूम करो, प्योर रोलिंग बोल के. Sir, you told us Actually, linear. नहीं, हाँ क्या इसमें प्योर रोलिंग है? सी, ये प्योर रोलिंग मीन्स आपको आगे जाएगा, ऐसा नहीं कि प्योर रोलिंग में नहीं जाएगा. क्या प्योर रोलिंग में, व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर रोलिंग मीन्स? टेल मी व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्योर रोटेशन इज डिफरेंट, प्योर रोलिंग इज डिफरेंट. प्योर रोलिंग मीन्स आगे भी जाएगा डेफिनेटली, एंड ये घूमेगा भी, दोनों होगा मोशन रोलिंग में. ओके, बट विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट वो द नेट वेलोसिटी इज जीरो, दैट इज कॉल्ड प्योर रोलिंग. हाँ, सो इसमें ऐड कर लो आई ओमेगा एंड यूज आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया, आपको मालूम है एम आर स्क्वायर बाय 2, ओमेगा इज नथिंग बट वी बाय आर, एंड प्लस आर एम वी साइन थीटा. थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड वी, एंगल इज 90. नो ऐड करो, सॉल्व करो ऑन द वीडियो सब लोग. टेल आंसर कितना है प्रणव? So 3 by 2 MVR. हाँ 3/2 mvr. चलो, now forces in rolling, we have some forces in rolling. कौन सा फोर्स है रोलिंग में? नॉर्मली रोलिंग में क्या फोर्स हो सकते हैं? टेल मी. Friction and yeah, friction. प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन होगा? No. भाई So because total, oh yeah, sir, it can be there. हाँ आप बोलो कृष्णा. भाई भाई I want. So but work Sir, I done don't know, will but be then it easy. won't be there. आप मानो. Sir, maybe not, Sam. सो आंसर इज फ्रिक्शन हो भी सकता है, नहीं हो सकता है. पिटल में हम लोग सोचेगा ऑलवेज नेट रिजल्टेंट वेलोसिटी तो जीरो है ना, कांटेक्ट है ना बोल के अब सोचेगा, बट स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी देयर, स्टैटिक फ्रिक्शन विल बी देयर. दैट इज मेक, विल सी द क्वेश्चंस के थ्रू समझेंगे. फ्रिक्शन आपको कब आएगा मालूम है? फ्रिक्शन कब आएगा मालूम है? whenever it is a non-uniform acceleration, non-uniform pure rolling में there will be friction. Friction may or may not be. Non-uniform pure rolling में, non-uniform pure rolling में may or may not be there friction में. But normal uniform rolling में नहीं रहेगा, friction will be zero. Okay, I'll make a table last में, I'll give the thing. आपको याद रखेगा uniform pure rolling में there is no friction. But non-uniform pure rolling में friction हो भी सकता है, नहीं हो भी सकता है. बिकॉज प्योर रोलिंग फ्रिक्शन का काम क्या है? टू मेक द बॉडी एवरी पॉइंट ऑफ टाइम में प्योर रोलिंग बनाने के लिए चेक करेगा, मतलब एक्सेलरेशन इक्वल करने के लिए, वेलोसिटी इक्वल करने के लिए दे इट इज ट्राइंग, द फ्रिक्शन इज ट्राइंग ऑलवेज. सो फ्रिक्शन मे और मे नॉट बी देयर इन द नॉन यूनिफॉर्म प्योर रोलिंग. ओके, चलो. सो व्हाट आर द फोर्सेस? वेट होगा,
नॉर्मल एक्शन होगा, फ्रिक्शन फोर्स होगा. ओके, सो दिस आर So, ओनली but जस्ट weight and नेम. normal हाँ, will cancel each other, right? क्या क्या? Weight and normal will cancel each other, हाँ, right? या वो वाला. ओके, दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग टॉर्क में आपको बहुत इजी हो जाएगा दैट टाइम. नॉर्मल एक्शन, वेट एंड फ्रिक्शन किधर भी एक्ट होना, इधर और इधर. So all acting, these are the forces acting in the horizontal surface when our body is rolling, right? Now इसका बेस में क्वेश्चंस करेंगे, समझो फ्रिक्शन कैसे एक्ट होगा, क्या होगा बोल के समझ में. थर्ड टॉपिक का पूरा पीवाईक्यूज करो एंड संडे विल टेक टेस्ट एंड चेक कैसे इसमें लेके आओ मार्क्स. कंप्लीट चैप्टर ऑफ कौन सा, सेंटर ऑफ मास से इधर तक पूरा. टाइम बहुत है ना, 1 week is there for you time. Because again when we enter into the mechanical properties of fluids, there is no time that time again. अच्छा, only fluids हो गया तो remaining chapters थोड़ा slow small only. Now the coming chapters Sir, are when will purely we problem complete based. this one? हाँ, today. Sir, when, अच्छा, sir, will we be able to complete fluids by this week? by this week ये उधर के बाजू में खिड़की है तो जंप करो उधर से. No, sir, because we don't have mains exam next week. So, like, if देखो we complete fluids ये by this चैप्टर week, कैसा होगा, then मतलब ये वीक में कैसा होगा मालूम है, वो फिल्म जाने समय वो स्टार्टिंग में नेम्स आएगा ना, ऐसा उधर उधर तक होगा ये वीक में. चलो जस्ट राइट दिस नेम, दैट्स इट, कुछ नहीं. चलो विल गो sir, फर्दर. 1 minute. ओके, चलो. अरे That's done. चलो क्वेश्चन के थ्रू समझो. A sphere of mass m and radius r, small r, as shown in figure, slips on the rough horizontal surface plane. Okay, जा रहा है, slip हो रहा है. At some instant, it has translation velocities. At that instant में the translation velocity is v naught है. And rotational velocity also given v naught by 2r. देखो v naught by r. Whether is pure rolling whether is pure rolling नहीं है, because v naught by r था तो pure rolling, v naught by 2r. Okay. Find the translation velocity after the sphere start pure rolling. Okay. You tell me first इसका translation velocity देखेंगे. इस पॉइंट का, ये इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट का वेलोसिटी इज v naught ओनली. एंड रोटेशन की वजह से टेल मी, कैलकुलेट टेल मी व्हाट इज द फॉर्मूला. r omega, right? r omega. So r into omega is how much? v naught by 2r. So it is v naught by 2. Tell me whether it is pure rolling. इधर भी देख सकते हैं ना, whether it is forward slipping or backward slipping. फॉरवर्ड स्लिपिंग में जा रहे हैं, कर बोल के जा रहे हैं. ओके, ठीक है. नाउ क्या होगा, इफ द नेट वेलोसिटी डायरेक्शन इज लाइक दैट, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो रहा है ना, फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन विच डायरेक्शन? फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग इन द opposite direction. Okay, now if friction is making the object to rotate, because torque acting, right, torque, friction is making that rotate, right? उसके वजह से if you see carefully, Sir, shouldn't friction act forward? why it is slipping, forward slipping, right? v naught by 2, v naught by 2 will be the backward, v naught will be the forward. Net velocity which direction? Net velocity किस तरफ आ रहा है? Right side or left side? Right, sir. Right side means friction will be oppose the motion, right? Friction act in the opposite direction. Okay. Okay, okay. Now देखो, a friction is linear velocity को क्या कर रहा है? What it is making? Slowing down or increasing the speed? Tell me. Slowing down. Slowing down. But omega को क्या कर रहा है? Tell me. Omega को क्या कर रहा है?
it is applying a torque, right? So ओमेगा को इंक्रीज कर रहा है, ओमेगा को इंक्रीज कर रहे हैं. So what is happening? फ्रिक्शन के वजह से the V naught is getting decreased and omega is getting increased. So ऐसा करके 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 एक सिचुएशन आएगा, एक सिचुएशन आएगा where V naught is equal to R omega. एक सिचुएशन आएगी because you all told that when I want the transition velocity when it start pure rolling, ऐसे करके करके एक पॉइंट P में आपको प्योर रोलिंग हो जाएगा. ओके, नाउ आवर इंटेंशन इज टू फाइंड व्हाट ट्रांसलेशन वेलोसिटी. इसका वेलोसिटी तो चेंज होगा ना, इसका वेलोसिटी मान लो इधर v नॉट है ना, v मान लो, एंड ओमेगा रोटेशन प्योर रोलिंग है ना, ओमेगा वी नो ऑलरेडी v इक्वल r ओमेगा v by r, राइट? दिस इज अ प्योर रोलिंग. करते करके प्योर रोलिंग में आया. नाउ आवर इंटेंशन इज टू फाइंड ट्रांसलेशन वेलोसिटी. ओके, यू टेल मी torque about point P is how much? Friction acting net. Torque about point P is how much? About point P I'm talking about. So Because it'll be 0. normal reaction, it is passing through acceleration. Mg is also passing through acceleration, and friction also acting through the. These are the forces, right? These are the forces. So torque is 0. If torque is 0, I can apply angular momentum is 0. Angular momentum is constant. Oh, conservation of angular momentum. कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाओ ना, लगाओ. इन दो केस में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा के सॉल्व करो. इनिशियल कंडीशन इज दिस वन, फाइनल कंडीशन इज दिस वन. ओके, अबाउट पॉइंट P you apply. So initial angular momentum is equal to final angular momentum. now ये ऑब्जेक्ट आगे भी जा रहे हैं, रोटेट भी हो रहे हैं. सो अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ दो एंगुलर मोमेंटम आएगा ना. टेल में इसका क्या आएगा? आई ओमेगा 1 प्लस, हाँ ये आपको ट्रांसलेशन भी हो रहे हैं ना, द पार्टिकल. सो व्हाट विल बी द आंसर इसका? एम वी आर and r and v, so m v naught into r because sin 90, right? इसका फाइनल मोमेंटम लगाओ, सॉल्व करो on the videos and solve. Sir, do we substitute the value of We have it? to substitute IS 2/5 mr square and omega स्फीयर 1 का is स्फीयर का by r. सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, स्फीयर का सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा. एंड डायरेक्शन इज सेम, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग हियर. वो Okay, ऑलवेज चेक करो. okay, हाँ. sir. Here r omega r v m. No solve. And find v. And initially omega के जगह में v naught by 2r यूज करना पड़ेगा. So omega 2 will be ओमेगा 2 के जगह में v by r. No, voice breaking. ओमेगा 2 के जगह में v by r. Sir, 6 V naught by 7. Yes, correct. Voice breaking. 6/7 v naught. 6 by 7 v naught. Got it. I have Yes, sir. Yes. Yes, sir, I got it. ना करो. Now same type of question में omega is v by r. In this direction में rotation देखो, इस direction में. Now same concept apply करो. Is asking find the linear speed of the sphere when slipping finally ceases and becomes pure rolling starts. Same concept apply करो. Now इस point में v आएगा and rotation का वजह से also r omega. So r omega means r into v by r. So it is also v. So net velocity will be 2v. That means it is forward slipping. The friction will be acting like this. Now
ये फ्रिक्शन इज अप्लाइंग ए टॉर्क ऑन दिस ऑब्जेक्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास. सो ये क्या करेगा, ओमेगा को डिक्रीज कर, देखो ये रोटेशन ऐसा हो रहा है ना, ओमेगा को डिक्रीज करके 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 जीरो बनाएगा, एंड देन इट विल इंक्रीज सच ए वे दैट इट विल फॉर्म प्यूर रोलिंग. ओके, सो करके 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 फाइनली आपको एक प्यूर रोलिंग का कंडीशन आएगा, एंड उसका वेलोसिटी, ट्रांसलेशन वेलोसिटी विल चेंज, राइट. हियर v ऑलरेडी गिवन, राइट, v डैश मान लो, एंड हियर r ओमेगा. Your omega is v by r given ना. Yes, हाँ. चलो इधर क्या आएगा, ओमेगा डैश, sir. राइट. सो r इंटू v डैश by r. नाउ टेल मी, इधर प्यूर रोलिंग में अबाउट दिस पॉइंट टॉर्क विल बी 0, and apply the angular momentum conservation and tell me answer. उधर तक रोल है, प्यूर रोलिंग में लेके आने का जिम्मेदारी ये वाला फ्रिक्शन है. Now if you see when you are applying angular momentum इस तरफ है, देखो ये वाला तो आउटवर्ड्स है, बट r को एक्सटेंड करो, देखो पार्टिकल इज मूविंग विद सम वेलोसिटी, राइट, r को एक्सटेंड करो, एंड ये वाला इनवर्स है, दैट मींस यू टेक दिस एज माइनस i ओमेगा 1 आएगा. ओके, रिमेनिंग पूरा प्लस ले लो. by 5v. नो, माइनस i ओमेगा 1 यूज किया, Yeah. रिमेनिंग पूरा प्लस ले लो. Since torque about point p is 0, that means initial angular momentum is Also 1 by 5. 5. No, Say 3 by 7. 3 by 7v. Good. So inertia is 2 by 5 mr square. mr square, 2 by 5 mr square. Only, right? Yeah, 2 by 5 mr square only, दोनों में. So क्या आएगा, माइनस i ओमेगा 1 प्लस r mb इज इक्वल टू i ओमेगा डैश प्लस r mb डैश. माइनस क्यों समझ में आया ना, वन डायरेक्शन इज अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, दैट्स व्हाई इधर माइनस डाल दिया, रिमेनिंग पूरा प्लस डाल. Yes, sir. But the answer is 3 by 7v. Sir, it's 3 by 7. v minus 2 by 5 is equal to v naught plus 2 by 5. 2 by 5 v डैश, अरे एक v लिया एक v डैश लिया ना, so minus Oh, okay, got it. so v dash is 3 by 7v. Okay, आया, मानो आया. So 3 by 7. Yes, I got it. चलो देखो ये वाला पॉइंट आई टोल्ड यू टू सी, रोलिंग एट कांस्टेंट स्पीड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस. अगर ऑब्जेक्ट रोल हो रहे बट कांस्टेंट स्पीड में, एट द टाइम नो स्लिपिंग टेंडेंसी, नो फ्रिक्शन नीडेड, फ्रिक्शन इज 0, टाइप ऑफ फ्रिक्शन इज 0. बट एक्सेलरेटेड प्यूर रोलिंग, देखो प्यूर रोलिंग में ऑप्शन में पूछेगा, एक्सेलरेटेड में, प्यूर रोलिंग में 0 फ्रिक्शन विल बी देयर, मींस एक्सेलरेटेड प्यूर रोलिंग में होगा. देखो स्पीड इंक्रीज होने डिक्रीजिंग होने दो, देयर इज अ टेंडेंसी टू स्लिप ड्यू टू एक्सेलरेशन. Okay, and static friction acts, the direction depends on the acceleration, which direction is going, that direction का depends है. friction act होगा, कौन सा friction act होगा, static friction will act. Static friction is always having tendency to make it pure rolling. See, initially pure rolling में जा रहे हैं, non accelerated मतलब accelerated pure rolling में जा रहे हैं,
the friction is acting, the static friction is acting. At that time, mein, the static friction is helping the body to stay in the pure rolling. Mein. Okay. And example, down the inclined plane, the tendency direction friction किस तरफ act होगा? The inclined plane में down है तो the tendency of friction will be friction acting in the upward direction, and static friction acts up. Example दिया है. सर्टेन टाइम्स में एक्सेलरेशन वगैरह दिया तो आपको फ्रिक्शन चूज करना पड़ेगा, द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन, एंड सॉल्व द क्वेश्चन. और क्वेश्चन के बाद वी लेफ्ट विद रोलिंग डाउन द स्टैट इंक्लाइन प्लेन वाला बाकी है. Do we need to write this down? आपको याद है तो ओके, नो प्रॉब्लम. बट क्या होगा मालूम है, सेकंड ईयर के बाद व्हेन आई आस्क, सेकंड ईयर में व्हेन आई आस्क प्योर रोलिंग मींस सर प्योर रोलिंग क्या है, टॉपिक क्या है बोल के बोल गया. थोड़ा याद दिलाने के लिए लिखो. Can you move a little? हाँ. They are doing statics one, right? Statics are fluid statics बोल के सुना नाम. और what they are doing barometer manometer ऐसा कुछ कर रहे हैं. Sir, they didn't start it yet, sir. Today you are doing collisions. ओके ओके चलो. So will we do point of percussions? हाँ. So will we do points of percussions? Point of Percussions. partitions. Partitions क्या है? Percussions, sir. So that alternate method to solve the questions easily or something. ऐसे ऐसे फालतू फालतू मत करो. कॉन्सेप्ट समझो, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करो एंड पीवाईक्यूज करो. 180 क्वेश्चंस आर देयर ऑन ऑलमोस्ट. वी डन दैट क्वेश्चंस क्वाइट इनफ. उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा. ओके डन. चलो. No, sir. शॉर्ट फॉर्म लिखो. इतना डन. Yes, sir. या ओके. नो क्वेश्चन करो. So what is saying? A force F acts tangentially at the highest point. A force F is acting highest point of the hollow sphere of mass m and radius r, kept on a rough horizontal plane. If the spheres roll without slipping, देखो, there is a pure rolling, right? Find the acceleration of the shell and friction force of the hollow sphere. Acceleration भी चाहिए and friction. मतलब the point is moving with some acceleration a. Okay. And is force is providing a torque. Force is making the torque to rotate, right? Matlab there will be acceleration, angular acceleration alpha. And friction is, since there is a non-uniform rolling, friction may or may not act. We don't know. Since we are asking friction force also, we don't know whether zero or not zero ना. So आपको direction लगाओ. Direction किधर भी लगा सकते हैं. इधर भी लगाओ, friction इधर भी लगाओ. We don't know, right? So हम लोग क्या करेंगे? Generally alpha के direction में, alpha is going is in this clockwise direction, right? And moving this direction, right? उसी direction में generally friction लगाया. अगर opposite में लगाए तो क्या होगा?
आपको नेगेटिव आएगा आंसर. If suppose if we put, we don't know which direction friction is acting, so if we put the direction in the opposite direction, final answer will be negative. So that means you can understand that friction is the opposite direction बोल के लगा रहा है. Okay, so since he is asking friction force and you know already non-uniform acceleration में friction may or may not act, right? So that's why we are putting this direction F. Okay, and now tell me इसके ये क्या करेगा? Bottom point pure rolling है ना A, and this is R alpha pure rolling में ना. Okay, now tell me in translation equation में. So you should put F plus F is equal to MA. Yes, net force equal to MA लगो. Net force equal to MA. What is the equation? सीधा में net force कौन सा है? F plus F, right? F plus F is equal to MA on the video. And दूसरा रोटेशन की वजह से, and you know रोटेशन की वजह से कितना है? FR minus small fr is equal to I alpha. खत्म करो. टॉर्क रहेगा ना, I टॉर्क is equal to I alpha. Okay, now find the acceleration. Whenever the acceleration is there, definitely we have net force equal to ma लगाने का. now net torque किस तरफ होगा? कौन सा डायरेक्शन में? देखो R into F perpendicular, and दूसरा टॉर्क फ्रिक्शन के वजह से होगा, which is opposite direction, right? Opposite direction. So आपको कौन सा डायरेक्शन में we take as positive? अल्फा के डायरेक्शन में we are taking as positive. So net torque कितना होगा? F into R minus F into R is equal to I is hollow sphere कितना है? 2/3 mr square into alpha. First equation, second equation. Okay, now इसको substitute करो. Sir, Hmm. is friction MA by 6 and acceleration 6F by 5M. Acceleration 6F by 5M. Substitute the in terms of F में चाहिए, in terms of capital F में चाहिए. Friction. Friction. Okay. So why is it 2/3? Oh, it's hollow sphere. Hollow sphere है ना, अल्फा के जगह पे since is acceleration yeah. pure rolling, A by R use करो. मानो understanding का? So this question I didn't understand. A But by I'm understanding now. I'll tell you. So F by 5. F by 5. देखो मानो ये वाला रोलिंग हो रहा है, there is a acceleration. देखो it is moving with some acceleration. ऐसा F लगा रहा हूँ. F का वजह से I tell you this is a uniform rolling है, non-uniform rolling है. Non-uniform में friction can act or not act, we don't know. Okay, which direction we have to put, we have to see, right? Since he is asking friction force also, we have to see. I put one direction F. अगर F opposite direction में लगा सकते हैं, but क्या है आंसर? फाइनल आंसर will be negative में आएगा. That is the thing. Okay, now after putting, now देखो दो इक्वेशन रोटेट भी हो रहे हैं, आगे भी जा रहे हैं ना. ट्रांसलेशन का इक्वेशन क्या होगा? नेट फोर्स इक्वल टू एम. नेट फोर्स कौन सा है? F plus F is equal to M into A. This is the first equation. Yeah. Okay, and ये रोटेट भी हो रहा है ना. रोटेट किस वजह से? टॉर्क वजह से हो रहा है ना. Who is the providing torque? Small f also and capital F also, right? But it is opposite direction में. Net torque equal to I alpha लगाया, and since is pure rolling A by R लगाया, and solve करने के लिए no देखो इसके वजह से the body is rotating in the clockwise direction. This force के वजह से this force is making the body to rotate in the anti-clockwise direction. Okay, that's why opposite direction में subtract करने का. Why we are taking this direction positive? Alpha का direction में हम taking this positive. आगे जा रहे हैं ना, the direction which take is positive. So ये दोनों equation को solve करो, ये दोनों equation solve करो, you will get as acceleration as 6F by 5M and small f as F by 5. Okay, so ऐसा क्वेश्चन आपको JEE मेंस में दिया है, एक क्वेश्चन. That's why I given this. Okay. Okay. So मैं Pranav understood? Yes, sir. Yes. चलो. Now, rolling on a body in inclined plane. Last topic. Rolling on a body in inclined plane. Inclined plane में suppose मालूम है inclined plane में एक ऑब्जेक्ट गिर रहे हैं. It can be any shape का anything. Rolling हो रहे हैं. And that too we're talking about pure rolling में. Okay. Now pure rolling में I want to calculate
acceleration. Okay, and also friction force I want to calculate. So tell me how to calculate. What are the force acting on it? One is normal reaction. You know already mg sin theta and mg cos theta downwards, and ये आगे भी जा रहे हैं, rotate भी हो रहे हैं ना, so pure rolling is happening, and it is a non-uniform motion or uniform motion? It is a नीचे गिर रहे हैं ना, non-uniform motion. Okay, चलो इसमें फ्रिक्शन भी एक्ट होगा ना. फ्रिक्शन किस तरफ एक्ट होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट होगा. राइट, नाउ अगेन अप्लाई करो, इधर कॉन्सेप्ट अप्लाई करो. नेट फोर्स इक्वल एम लगाओ. टेल मी एनीबॉडी. So what are we supposed to find? Acceleration, friction, Okay. same type of So question. you get mg sin theta plus friction is equal to ma. mg sin theta minus f ऑपोजिट Oh, डायरेक्शन में yeah. इज इक्वल टू ma. फर्स्ट इक्वेशन ट्रांसलेशन में. एंड Yeah. रोटेशनल में क्या यूज करेंगे? टाउ इज इक्वल टू I alpha. Now who is providing a torque here? Who is providing torque about center of Sir, mass? is it a disk? Huh? Sir, is that a disk? नहीं, movement of inertia I ले लो. Okay. So of what points? In terms of of which point should we find torque of? about center of mass. So then only friction. Only friction will be acting. The torque, it is providing torque in the this anti-clockwise direction. So क्या करेंगे? Tell me. R into F perpendicular. R कितना है? R into F is equal to, see in terms of moment of inertia, radius of gyration में लिखेंगे. Radius of gyration में लिखेंगे. So कितना होगा? Okay. mk square times and alpha is what here? Alpha is equal to, ठीक है, अल्फा वाले विल ट्राई लास्ट में सब A by- करेंगे हम लोग. ए बाय आर लगा के कर सकते हैं. ओके, सो टू इक्वेशंस यू गॉट एंड Yeah. सबस्टिट्यूट द वैल्यूज. ये दोनों सॉल्व करने से आपको 1 and 2, सो मतलब एल आर एफ लगा के एम के स्क्वायर इंटू ए बाय आर लगा के इफ यू सॉल्व ये Sir, दोनों. g sin theta by 1 plus k square by r square. Yes, correct. So after solving 1 and 2, you will get final equation A equal to g sin theta by 1 plus k square by r I by square. mr square. So it came Huh? our exam. So that's not the direct formula in an exam. This is a formula, direct formula to use. Yeah, they just ask what's the formula in an exam. ये फॉर्मूला यूज करेगा, बट थोड़ा कुछ ट्विस्ट दिया तो आपको मेथड समझो. ट्रांसलेशन एंड रोटेशन दोनों इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो दैट्स इट. ओके, एंड फ्रिक्शन का फॉर्मूला विल बी सेम थिंग, mg sin theta by 1 plus it is r square by k square is a friction. After solving we'll get these two formulas, friction का formula and this formula. And इसको क्या बोलते हैं? C, we call this as constant, right? I can call as C simply. So some books में they'll give g sin theta by 1 plus C. C is always k square. Gamma. हाँ Also took it as gamma. हाँ ठीक है. C some books में they'll give C. So C is nothing but k square by r square. This will be how much? mg sin theta by 1 plus 1 by C. Finally. So C के जरूरत नहीं. If you want to remove C जैसा, और C is nothing but k square by r square. है? Now इसमें they will ask sometimes velocity also. Velocity का formula याद है? By using conservation of mechanical energy, now करने की जरूरत नहीं है. By using conservation of mechanical energy, we'll get V is equal to under root 2gh by 1 plus C. C is क्या है? Tell me. The coefficient of नहीं moment of नहीं, inertia. नहीं है. We took constant, right? K Yeah. square by r square. K I square by r squared by pi by mr square. हाँ, K is radius of gyration. Radius of gyration मालूम है ना? M को डिवाइड Root कर I लो, by m. Yeah. R को बाहर ले लो एंड अंडर रूट डाल लो. Root I by m. हाँ, root I by m. Yeah. So these three formulas you have to know. Velocity का. हो गया? So these are formulas I told you. देखो प्योर स्लाइडिंग में नॉर्मली ए वाले मालूम है जी साइन डबल के, एंड बी इज इक्वल अंडर 2gh मालूम है. बट इसमें क्या है? प्योर रोलिंग में जी साइन बाय 1 plus C and under root 2gh by 1 plus C.
where C is K square by R square. Okay. Now इसका क्वेश्चंस एक बार देखेंगे, हो जाएगा। डन ना? हाँ करो, फॉर्मूला आ गया ना, फॉर्मूला यूज करो, डायरेक्ट आ जाएगा। Yes, sir. जेएमएस क्वेश्चन करो। I'll give options. It 2021 में पूछा। Sir, is there a formula of time also? टाइम फॉर्मूला नहीं है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू टर्म, फर्स्ट एक टाइम का यू कैन फाइंड बाय यूजिंग इक्वेशन मोशन। एक्सेलरेशन फाइंड करो पहले, देन Yeah. यू कैन यूज इक्वेशन मोशन v equal u plus at. Time also we can write formula, but a apply करो v equal u plus at Sir, लगा। but then v is finally it's 0, right? yeah, got it. Now solve करो। Initial speed is given to you 1 meters per second. Total time will be जाके आने के वाला टाइम, राइट? एक्सेलरेशन आ गया कृषि आपको? एक्सेलरेशन यू गॉट? Yeah. आफ्टर फाइंडिंग एक्सेलरेशन इज आस्किंग टोटल टाइम, राइट? v equal u plus at लगो, Sir, I फाइंड टाइम। found. हाँ Yeah, but then I'm not getting anything close to that. हाँ, टोटल टाइम जाके आने वाला टाइम, राइट? इंटू 2 करो, समझ में आया? तो Okay. टाइम हाँ So 0.52 or 0.57? 0.52. 0.57 So it'll be 0.2 something. बिकॉज टाइम कितना है आपको? 1/3.5 आया होगा ना, 1/3.5, सो इंटू 2 किया तो 0.57 आएगा। मान अंडरस्टूड? So 1 second. करो करो। Yes, sir. Yeah, sir, got it. Easy only. या नेक्स्ट वन करो, मैं करो। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन 2023। So cylinder is mr square by 2, right? हाँ So 2 root 2. नो Sir, MOI of solid cylinder is mr square by 2, no? Okay. हाँ सॉल्यूशन मस्ट लाइक डिस्क ओनली। 60, 70. वी फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, वी का फॉर्मूला था। Yeah.
H means Sir, this one, 2. right? आपको Sir, 2. 2 is answer. Yeah, so 2. Yeah. So I got 2 root 3. See, आपको H वाला कौन सा यूज करेगा? Oh, never mind, never mind. I got it. I made a mistake. Okay. Sir, why do we need H? हाँ, फॉर्मूला में स्पीड, हाउ कैलकुलेट स्पीड, दैट फॉर्मूला यूज्ड। अब v का फॉर्मूला क्या है? V square minus U square is equal to. वो नहीं, ऑलरेडी वी गिवन राइट फॉर्मूला, v इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh by 1 plus c बोल के, velocity at the bottom point. Okay, that you can use. H is what here, ऐसा inclined plane में इसका कंपोनेंट निकालने का 60 cos 60 sin, 60 sin will be this one. Okay, नहीं करो। So 1 will be 2:1 because it takes, like, it goes double this. I mean, one second. The given T2 by T1 is it is in the form of 3 by x आएगा. So he's asking x equal how much? Is also 2021 में पूछा. So when it is slipping, you should take a equal g sin theta, right? Apply equation of motion s equal ut plus half a square and solve. A circular disc reaches from the top to the bottom of inclined plane L है, and slips down the plane and takes t1 time. When it rolls down before first slipping है, so the acceleration will be g sin theta. And second case में ये रोलिंग करके जा रहा है, मतलब एक्सेलेरेशन आपको फाइंड करने का बाय यूजिंग द फार्मूला. Sir, 2. हाँ 2. अरे आ गया पूरा परफेक्ट. क्या किया? Sir, I found T1 by using the normal slipping condition, and then later T2 I did the length by the acceleration. The yeah. first one that we found. Yeah. So what's the See, इसका फर्स्ट में use the equation of motion also you can solve. S equal ut plus half square करके भी आपको दोनों इक्वेशन आएगा, डिवाइड किया तो आ जाएगा आंसर. suppose flipping down a This few can way be translation square है, so we will be the root. हाँ भाई, नॉर्मल इक्वेशन मोशन अप्लाई कर लो, आ जाएगा भाई. गलती की थोड़ी ना है. फर्स्ट इक्वेशन में एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ स्क्वायर लगाओ. ओके, हियर यू इज 0, एस इज एल, हाफ ए इज व्हाट, जी साइन थीटा इनटू टी स्क्वायर. Yeah, so C1 square. सेकंड कंडीशन में ए फाइंड करने का बाय हाँ, एंड सेकंड कंडीशन में ए यूज करो बाय यूजिंग दैट फार्मूला. समझ में आया? जी साइन थीटा बाय 1 प्लस के स्क्वायर बाय स्क्वायर वाला वो यूज करके ए फाइंड करके अगेन एल इज इक्वल टू हाफ दैट न्यू ए वाली जो भी आया ए डैश वाला आया इनटू टी स्क्वायर. इफ यू डिवाइड यू विल गेट एज रूट 3 by 2. Yeah, got it. So x equal to. ओके, सो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, 1 मिनट में हो जाएगा. इट विल बी रीचिंग बॉटम फर्स्ट वाला ऑन द वीडियो. रीचिंग बॉटम फर्स्ट. टेल मी हु विल मतलब
which object will come first? कैसे पता लगेगा? So first solid sphere, So the one with higher then inertia. solid Huh? cylinder, then hollow sphere, then hollow भाई cylinder. by heart कर लिया. Higher कहते हैं. inertia. Basically क्या है? I've given exam only. हाँ. So देखो, acceleration जो maximum है, then only the time taken is minimum, right? And acceleration maximum means k value क्या होगा? ये maximum होने के लिए ये वाला less है ना? मतलब किसका k कम है उसका टाइम कम है, मतलब उतना फास्ट में रीच होगा. टाइम लेसर मींस जल्दी जल्दी रीच होगा, राइट? सो नाउ टेल मी, इफ आई गिव एन ऑप्शन फॉर डिस्क एंड hollow sphere, Sphere. Sure, disk, क्या मानो? 100 piece. Disk. disk. हाँ, सो वो लोग लिस्ट दे के बैठ करो No, बोला they haven't given list. बोला. हाँ, But I then don't remember. I'm just gonna remember the moment of inertia. No. हाँ, yes, correct.